Hello students, I hope all of you are well. Last video we had completed how the gas will turn into liquid state. Then from this graph, this is for carbon dioxide gas, how pressure and volume affect at different temperature. Graphs are called isotherm because they are plotted against pressure and volume at constant temperature. We had also done the critical temperature, maximum temperature at which gas turned into liquid state. For carbon dioxide, that critical temperature is 30.98 degree Celsius. Now there are some permanent gases. What are permanent gases? Permanent gases होती हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. They are called permanent gases. So these permanent gases always show positive deviation. When we plotted their graph, we had seen that for pressure and for Z, this is for ideal gas, Z is 1. For these gases, the graph move always upward. But for these gases, Z is always greater than 1. They show positive deviations. How to liquefy them? Positive deviations, they show, it means that they have very less intermolecular attraction force. So these permanent gases which has positive deviation, they have very less intermolecular attraction force. How to liquefy them? Permanent gases have very less intermolecular attraction force. Van der Waals attraction होए सा weak. Intermolecular attraction force. How to liquefy them? आलू को ना केवल इतना liquefy करना. इनको लिक्विफाई करने के लिए पहले इनको कंप्रेस करना पड़ेगा, फिर इनके कूल करना पड़ेगा. क्यों दो प्रोसेस करने पड़ते हैं? बिकॉज इफ वी कंप्रेस देम, कंप्रेशन मतलब प्रेशर अप्लाई करके वॉल्यूम को कम करना. तो कंप्रेशन से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, मॉलिक्यूल्स कम क्लोज, मॉलिक्यूल्स कम क्लोज. और कूल करने से क्या होगा? By cooling, what will happen? जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे. तो दोनों तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? उनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस कम है और मॉलिक्यूल्स को पास लाना है. तो हाउ टू मेक देम कम क्लोज? तो वी हैव टू डू फर्स्ट कंप्रेशन by applying pressure. What will happen? On compression, the molecule will come in the close vicinity, and by cooling, what will happen? Their kinetic energy will decrease, so they will not move apart, so they will come closer. दूर नहीं जाएंगे तो पास आएंगे, और पास आते हैं तो क्या होता है? जैसे गैस है, इसमें मॉलिक्यूल दूर है. If they come close, then what will happen? They will turn into liquid state. So such gases which are permanent gases, their intermolecular attraction forces are very less. How to convert them into liquid state, or how liquefaction of such gases can be carried out? First, by making molecules together by compression, and secondly by cooling. By cooling, their average energy will decrease, so they come close, and by compression also, high pressure, molecule will come close. So ultimately, the intermolecular attraction forces can be increased and the gases will be turned into liquid state. Now we'll study that. Is it possible to have, without reaching in this dome area, can we convert gas into liquid or liquid into gas? Can we? Yes, we can. कैसे? देखिए इधर. What is my question? Can we convert gas into liquid or liquid into gas without moving to this dome area? આ ડોમ એરિયામાં આવ્યા વગર તમે ગેસને લિક્વિડમાં, લિક્વિડને ગેસમાં ચેન્જ કરી શકો? Yes, we can. कैसे करते हैं देखिए. Suppose first we move from A point to F point. First we will move from A to F. While moving A to F, temperature increase 21.1 degree, and F it is 31.1 degree. Temperature will increase
volume remain constant and pressure also increases. So A to F, temperature of gas increases without compression. कोई गैस में वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है, विदाउट कंप्रेशन. अपन कंप्रेस नहीं कर रहे गैस को, सिर्फ उसका टेम्परेचर को अपन इंक्रीज कर रहे हैं 21.5 डिग्री से 31.1 डिग्री. क्लियर? नाउ A to F कंप्लीट. उसके बाद हम मूव कर रहे हैं, देन वी रीच टू द पॉइंट G, F to G. See, when we move F to G, temperature remain constant 31.1 degree Celsius. So second is at constant temperature 31.1 degree Celsius. कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? F to G. When we move F to G, what happened? Pressure increase, volume decrease, मतलब compression takes place. Pressure increase, volume decrease, compression is there. At constant temperature, gas compress. Still it is gas only. अजय gas अच्छे. Now from G, when we move down towards D, પાછા 21.5 ડિગ્રી ઉપર જ આવીએ છીએ આપણે. જ્યાંથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું વાં જ આવીએ છીએ. A to F, A ઉપર ટેમ્પરેચર કેટલું હતું? 21.5 ડિગ્રી. F ઉપર ટેમ્પરેચર કેટલું હતું? 31.1 डिग्री. तो अपन ने स्टार्ट 21.5 से किया था. कांस्टेंट टेम्परेचर पे G तक पहुंचे. अब कहाँ आना है? G to D, vertically down. Again the temperature will decrease. No compression, क्योंकि यहाँ से यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है. Without compression, temperature decrease. फिर अब 21.5 पे आ गए. लेकिन while moving from G to D, we come across point H, and as you know, this point H is 30.98 वाला temperature. That is the critical temperature at which the gas turned into liquid state. तो आ जो અહીં સુધી gas છે, અહીંથી આ liquid state છે. So while moving down from G to D, we come across point H, which is liquid state. So while moving G to D, we come across point H. H point क्या रिप्रेजेंट करता है? लिक्विड स्टेट. एक ही झटके में लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया. टू फेज आया ही नहीं. जो टू फेज रीजन है वो तो आया ही नहीं. सीधा सिंगल फेज गैस and then it is turned into liquid state. Similarly, reverse process, we can convert liquid into gaseous state. So without moving into two phase region, we can convert gas single phase to liquid single phase. But for that we have to reach up to critical temperature. અહીં તો આવું જ પડશે. critical temperature ઉપર જ ગેસ liquefy થાય. તમે 21.5 થી 50 સુધી વયા ગયા, પણ 50 થી જ્યારે પાછા આવશો ત્યારે આ ટેમ્પરેચર તો મળવાનું છે ને 30.98. એટલે જ્યારે આ ટેમ્પરેચર ઉપર આવશો 30.98, in whole process the gas will turn into liquid state. So gas can be converted into liquid state, or liquid can be converted into gaseous state in single phase. There is no need to move in two phase region. तो two phase region, ये जो region है उसमें क्या होता है? कंटिन्यूटी होता है. देयर इज कंटिन्यूटी बिटवीन लिक्विड एंड गैस. कंटिन्यूटी वर्ड गैस कब बोलते हैं, वेपर कब बोलते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. गैस वर्ड कब यूज करते हैं, वेपर वर्ड कब यूज करते हैं, व्हाट इज कंटिन्यूटी बिटवीन टू फेज, दैट आई विल एक्सप्लेन यू. इसमें देयर इज कंटिन्यूटी बिटवीन गैस एंड लिक्विड. इसलिए दोनों के लिए एक वर्ड यूज किया है, फ्लूइड. इसको भी फ्लूइड बोलते हैं, इसको भी फ्लूइड बोलते हैं, बिकॉज देयर इज कंटिन्यूटी बिटवीन गैस एंड लिक्विड. डोम एरिया में क्या होता है? देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन गैस एंड लिक्विड इन दिस डोम एरिया. देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन गैस एंड लिक्विड.
और आसानी से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिकॉज देर इज अ सरफेस विच सेपरेट लिक्विड इन द गैशियस स्टेट लाइक दिस આવી રીતના હોય વચ્ચે એક સરફેસ જેવું હોય એટલે liquid is nothing but it is dense gas. We can say that it is dense gas. जैसे ये गैस के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो बनेगा वो बिल्कुल ऐसे डेंसिटी ज्यादा होगा, वो लिक्विड है. तो we can have a separate definite boundary between them. There is equilibrium between two, but there is separate boundary. और जब ये बाउंड्री हट जाती है, कब हटती है, कब देखने को मिलती है बाउंड्री? जब टेम्परेचर कम होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होगा. अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है या क्रिटिकल टेम्परेचर है तो ये बाउंड्री खत्म हो जाता है और एक सिंगल फेज आ जाता है. So there is a continuity between gas and the liquid state. That's why we call fluid for both the terms. But that is critical temperature or above that. But if below critical temperature we are talking about, then dome area will come, of course, and there is equilibrium between gas and the liquid state. And we can just distinguish between them. This is gaseous state and this is liquid state. Because liquid state is nothing but it is dense gas. गैस का मॉलिक्यूल बहुत नजीक हो, एकदम डेंसिटी વધારે હોય. तो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर जो स्टेट होता है, गैशियस स्टेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर. व्हाट डू यू मीन बाय वेपर? वेपर इज द gaseous state below the critical temperature. When liquefied, then it is called vapor. So vapor word is used when you are liquefying the gas below critical temperature by applying pressure. At that time the word uses vapor. Otherwise when gas is liquefied at critical temperature or above critical temperature, above तो था से नहीं, at critical temperature if the gas is liquefied, then it is word as liquid CO2. और vapor CO2 कब यूज करते हैं? जब आप गैस को लिक्विफाई कर रहे हो क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो. यहाँ भी तो लिक्विफाई होता है ना गैस, खाली क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही थोड़ी होता है, नीचे के टेम्परेचर पे भी लिक्विफाई होता है, लेकिन हमको उस पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है. तो बाय अप्लाइंग प्रेशर, इफ यू आर लिक्विफाइंग एनी गैस बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, then the substance, that liquid form, is known as vapor. So that is the difference between vapor and the gas. Now we will do one sum, problem number 5.5. Gaseous possesses characteristic critical temperature will depend upon the magnitude of the force. Critical temperature of ammonia, carbon dioxide are given. Question we are solving. What type of question they may ask? It's 5.5. Two gases are given, ammonia and carbon dioxide. For ammonia, critical temperature is given as 405.5 Kelvin. And for CO2, it is critical temperature is given 304.105. The question is, which gas will liquefy first? And when you start cooling from 500 Kelvin to their critical temperature. अब 500 Kelvin पे हैं दोनों gases. Initial temperature for both the gases given as 500 Kelvin. When you start with 500 Kelvin, दोनों को liquefy करोगे तो कौन सी गैस पहले liquefy होगी? तो पहले जो liquefy होगी जिसका critical temperature ज्यादा होगा. The gas having high critical temperature will liquefy first. High TC will liquefy first. क्योंकि जब हम 500 केल्विन से कूलिंग करना स्टार्ट करेंगे तो पहले कौन सा टेम्परेचर मिलेगा? 405.5. आप 500 से कूलिंग स्टार्ट करते हो यहाँ से तो पहले कौन सा टेम्परेचर मिलेगा? 405.5. फिर कूल करोगे तो आपको ये 304.1 मिलेगा. तो पहले कौन लिक्विफाई होगा? पहले अमोनिया लिक्विफाई होगा. तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो जल्दी लिक्विफाई होता है. जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है वो देर से लिक्विफाई होता है. क्लियर? एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज में. इट इज क्वेश्चन नंबर 22, 5.22. Exercise question.
He's telling critical temperature for carbon dioxide and methane are given 31.1 minus 81.9. Carbon dioxide, methane, critical temperature 31.1 degree minus 81.9 degrees Celsius. Okay. This question is, which of the following gas has a stronger intermolecular force and why? दोनों में से इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स किसमें ज्यादा होगा और कैसे? तो क्रिटिकल टेम्परेचर और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स में क्या रिलेशन है? मोर क्रिटिकल टेम्परेचर मींस इजीली लिक्विफाई और इजीली लिक्विफाई कौन होता है? जिसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा. इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स मोर, याद रखना है, अट्रैक्शन फोर्स मोर. तो जिसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई, क्योंकि वो इजीली लिक्विफाई होगा. तो इन दोनों में से CO2 will have more intermolecular attraction force because its critical temperature is high and thus CO2 gas will easily liquefy compared to methane gas. Clear? Now we have to do one more sum, 5.20. What is it? He is telling what is the SI unit for quantity P, V square, T square upon N. SI unit बताना है. What is SI unit for P? Pascal. For volume it is meter cube. For temperature it is Kelvin. For N it is mole. So what is the unit? Pascal, meter raised to 6, Kelvin square per mole. This is the unit of SI unit of P, V square, T square upon N. You should know the SI units for different physical quantities. Now one or more question we will do. 5.10. Easy है questions. आप सॉल्व करो, फॉर्मूला बेस्ड है, जल्दी से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 34.05 मोल ऑफ फॉस्फोरस वेपर, वॉल्यूम इज गिवन एज 34.05 ml. Phosphorus vapors weighs 0.0625 gram at 546 degrees Celsius temperature. Kelvin. Convert always temperature into Kelvin. 0.1 bar pressure. Pressure is given 0.1 bar. As pressure in bar, volume you have to convert in liter. R unit will be 0.0831 liter bar mole into Kelvin. So we have to determine molecular mass. Which formula? Ideal gas equation. PV is equal to nRT. PV is equal to W by mRT. W upon M RT. M निकालना है, M को सब्जेक्ट बनाओ. W RT upon PV. What is weight given? 0.0625. R is 0.083. Temperature 819. देख लेना, आ रहा है ना. 6 plus 3 9, 12 1, 5 2 7 1 8. Pressure is 0.1 and volume is given as 0.03405. If you solve this, you will get answer in gram per mole. Calculator से आप इसको solve कर लीजिए. Direct formula based questions છે. पहला list बनाओ what is given, apply the formula and calculate the answer. One more I'll do for you. Question number 5.9. 5.9. What is 5.9?
Density of a gas is found to be 5.46 gram per decimeter cube. 5.46 gram per decimeter cube at 27 degrees Celsius, 300 Kelvin. At 2 bar pressure. Clear? Now he is telling what is the density at STP. So this is D1, this is T1, this is P1. We have to calculate density at STP. STP का temperature 273 Kelvin. STP का pressure 1 bar. 2 times we have to apply density formula. Gas is same. What is the formula for calculating density? Density, mass, pressure, volume relation था? नहीं याद रहता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं. Mass upon molecular mass, RT. अब तो P ने M ने ओली साइड ले लियो. M by V શું થઈ જશે density. આ formula છે Pm is equal to dRT. 2 times we have to write this formula. P1 M तो सेम रहेगा, R सेम रहेगा, टेम्परेचर अलग दिया हुआ है. P2 D2 RT2. R cancel, M cancel. Put up the values. Pressure is 2 by 1. D1 D2 5.46. D2 we have to determine. Temperature first 300. Second temperature 273. Calculate D2. It would be 100. 91. This would be 273. So D2 would be 273 upon 91 gram per decimeter. Solve कर लेना, आंसर आ जाएगा. So this way we can determine, we can solve the sums. It is easy, just you have to remember the formulas. Especially ideal gas equation और density के साथ जो उसका relation है वो अगर आप उतने formula कर लेते हो तो I think the questions are easy. Try to solve by yourself. Don't look at solved examples and all how they are solving. No, try by yourself. If you are not able to, then just tell me, I'll solve for you. But always try to solve numericals by yourself only. Then only you come to know where you are finding difficulty, or whether you are finding difficulty in formula or in calculations or in calculator mistakes. So just try by yourself. Clear beta? Next video we will talk about liquid state of matter.